Hello and welcome to Prowings CS. How you all are doing? I'm also doing great. So इस बार कंपनी लॉ का टेस्ट हुआ और कंपनी लॉ के टेस्ट का ये 15 to 23 का चैप्टर बहुत क्रिटिकल था। 50 मार्क्स का चैप्टर के हिसाब से है। सो काफी स्टूडेंट्स थोड़े बहुत स्ट्रगल करते हुए भी दिखे, लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस था एंड काफी लोगों ने दिया, बहुत लोगों ने दिया, तो अच्छा लगा। एंड पेपर चेकिंग ओके, सबको मिल भी गए हैं। सो अब देखते हैं कि आंसर्स क्या क्या लिख सकते थे। जस्ट एक मॉडल आंसर्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए एंड थोड़ा बहुत डिस्कशन कर देता हूँ कि कैसे आंसर लिखने थे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना था, बस इसका ध्यान रखिए। और जो लोग भी टेस्ट पेपर्स डाउनलोड कर रहे हैं, प्लीज 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 उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए, याद रखिएगा, सिर्फ टेस्ट पेपर्स को देख के या पढ़ के काम नहीं होने वाला। वो तो आप वैसे भी नोट से पढ़ रहे हो, तो जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जो भी नोट्स पढ़ रहे हो, इससे ध्यान रखो कि कैसे आपको आंसर लिखना है। एग्जाम में क्या उसके बारे में सोचना आना चाहिए। और दिन में 1 घंटा हो सके तो प्लीज, या तो हमारे टेस्ट पेपर या आपके घर के कोई भी टेस्ट पेपर या जैसे भी हो, आंसर छुपा के सिर्फ क्वेश्चन देख के सोचो कि अगर आप लिख सकते हो तो लिख के देखो। आप खुद ब खुद समझ जाओगे सेंटेंसेस कैसे फ्रेम हो रहे हैं, वर्ड्स कैसे फ्रेम हो रहे हैं, आउटपुट एग्जाम से पहले कैसे जाएगा। देखो, कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर होगा, आप कभी भी ध्यान देना, वो प्रैक्टिस करता है फिर जाके वो परफॉर्मेंस दे पाता है। उसी तरह आपको प्लेयर बनना है, स्पेक्टेटर नहीं। बैठ के सिर्फ आपको देखना ही नहीं है कि नोट्स देखते जा रहा हूं, आपको खेलना भी है गेम। तो ये गेम खेलने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस एंड परफॉर्म वेल। ओके, चलो, विद दिस लेट्स सी हाउ आर वी परफॉर्मिंग इन आवर टेस्ट। सो हियर वी कम। क्वेश्चन ऐसे था, रॉयल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, हैविंग इश्यूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 40 lakhs equity shares in the AGM. Mr. Karan, holding 3,40,000 equity shares, has appointed Mr. Mayur as his proxy. Also, Mrs. Mona is holding 85,000 equity shares, has appointed Ms. Radha as her proxy. In the AGM, both Mr. Mayur and Ms. Radha demands a poll on a resolution. Advice that you would give to the chairman. अब देखो, कंपनी लॉ का पेपर होता है और कई बार मैंने बोला है कि स्टूडेंट्स को प्लीज 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 आप लॉ डिस्कस करके आंसर लिखा करो, क्योंकि कंपनी लॉ के पेपर में ये चीज का बहुत इंफ्लुएंस होता है। आप डायरेक्टली उसको एक तरह का कंक्लूसिवनेस पे मत ले जाओ कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, इसलिए ये है। व्हाट इज द रेलेवेंट लॉ इन दैट रिस्पेक्ट, और फिर उसके बाद में उसका आंसर क्या आता है। when you write a proper law and then answer, तो ये एग्जामिनर, देखो अल्टीमेट एम यही है, एग्जामिनर जानना चाहते हैं क्या तुम्हें उसका लॉ पता है। क्योंकि किसी को भी सजेशन देने से पहले आप एक लॉ का स्ट्रक्चर करते हो, फिर उसमें से आप बताते हो। बस उसी तरीके से तो यहाँ पे आपको एडवाइस देना है कि एक दो प्रॉक्सी वालों ने पोल डिमांड किया, प्रॉक्सी है, पोल डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉक्सी कौन अपॉइंट कर सकता है, पोल डिमांड कर सकते हैं। चेयरमैन को पोल कितने टाइम में लेना चाहिए, और कौन से पोल को अर्जेंटली लेते हैं और कौन से पोल को बाद में लेते हैं, ये हो गया लॉ का पॉइंट। तो लेट्स डिस्कस एंड राइट द आंसर। तो आंसर लिखते समय हम लिख सकते हैं सेक्शन 105, any member of a company is entitled to attend and vote at the meeting of the company and shall also be entitled to appoint another person as a proxy to attend the meeting and vote at the meeting on his behalf. बराबर, ये हम सेक्शन 105 लिख रहे हैं। The proxy shall not be entitled to speak at the meeting and shall not be entitled to vote except on a poll. बराबर। And further, section 109 provides that before on declaration of the result of the voting on any resolution by show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting on his own motion and shall be ordered to be taken on the demand in this behalf. So poll can be taken by the chairman on his own motion or any kind of demand. In case a company is having a share capital, then the members present in person or by proxy having not less than 1/10 of the total voting shares or holding shares on an aggregate sum of not less than 5 lakhs rupees, such higher amount as may be prescribed paid up. मतलब हम बता रहे हैं कि पोल कब डिमांड होगा, तो पोल कैन बी डिमांडेड बाय व्हेन द कंपनी इज हैविंग अ शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 1/10 या person holding not less than 5 lakhs rupees ka share. And in case of any other company, by any member or members who are present in person or by proxy were allowed and having not less than 1/10 of the total voting powers. तो ये हो गया क्लॉज बी का आंसर। फिर हम लिखते हैं द डिमांड फॉर द पोल में बी विथड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हु हैज मेड द डिमांड। क्लियर। फिर आप बता सकते हो द पोल, दैट इज द पोल, a poll which is demanded for the adjournment of the meeting or appointment of the chairman shall be taken forthwith. तो कुछ polls आपको urgently लेने पड़ते हैं, तो these are the polls that you can take urgently.
A poll demanded on any question other than the adjournment of the meeting or appointment of the chairman shall be taken at such time not being later than 48 hours from the time when the demand was made. तो वो 48 hours के बाद या 48 hours के अंदर लिया जाता है. Okay, as the chairman of the meeting may direct. Okay, now where a poll is to be taken, the chairman of the meeting shall appoint such number of persons as he deems necessary to scrutinize the poll process and votes on the poll. So that's called appointment of the scrutineers. तो chairman scrutineers appoint कर सकता है उस poll के हिसाब से. Clear? और फिर हम बोल सकते हैं the chairman of the meeting shall have the powers to regulate the manner in which the poll shall be taken. So it is the entire game of the chairman to decide कि poll कैसे होगा. Okay, the result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken. So whether the resolution is passed or not, that poll has to decide. So in view of the above, the chairman will be advised as below. Mr. Mayur and Ms. Radha, they are the proxy. They are not entitled to speak or vote on the show of hands, but they can definitely demand poll, and that's what they have done. Since the demand for poll has been made by them, who are the proxies, in compliance with the above requirements, the chairman will have to arrange for taking of the poll within 48 hours as well. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये कितना है 40 lakhs का कैपिटल, ये कितना है 3 lakhs 40,000, ये 3 lakh, तो 10,85,000 और 3,40,000 10% से combinedly more है, and that's the reason why उनको पोल के लिए डिसीजन लेना ही पड़ेगा. That's why you're giving this answer. और आपने ये भी बता दिया कि पोल के कोरिलेशन में लॉ इस पॉइंट पे क्या है. तो इस तरीके से आपको लॉ समझाना है और फिर उसके बाद उसका रिस्पेक्टिव आंसर देना है. अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप फिर कंपनी लॉ के पेपर में मस्त मिस्टेक करने वाले हो. ओके, तो आप समझ में आ रहा है एक्सपेक्टेशंस क्या चल रही थी. चलो, लेट्स सी दिस. Ajit is a director of PQR Limited. The board of directors of the company is considering a proposal for purchase of its office premises for which it is owned by Ajit by issuing a fully paid equity shares. What advice would you give to the board of directors keeping in view the provisions of the Companies Act? Okay. अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि एक कंपनी का डायरेक्टर है और कंपनी उसका ऑफिस खरीद रही है और सामने शेयर्स ले रही है. अरे ये तो सीधा सीधा केस है, कंसिडरेशन नॉन कैश वाला, जहाँ पे आप कंपनी के डायरेक्टर से ले रहे हो और ऐसा मना है ना, बिना परमिशन के आप ले नहीं सकते. किसकी परमिशन? शेयर होल्डर्स की. पैसा तो उन्हीं का लगा हुआ है. याद आया? Consideration other than cash, section 192 का case. Exactly. So the provision is non-cash transaction involving the directors are contained in 192. वहाँ पे firstly ये लिखा है कि no company shall enter into any kind of arrangement by which a director of the company or its holding subsidiary or associate company or a person connected with him acquires or is to acquire the assets for a consideration other than cash from the company. Clear? तो ये पार्ट क्लियरली लिखा है कि कंपनी कभी भी अपने डायरेक्टर से डायरेक्टली कोई भी एसेट्स एक्वायर नहीं करेगी, और द कंपनी एक्वायर्स और इज टू एक्वायर द एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम सच डायरेक्टर और द पर्सन सो कनेक्टेड unless a prior approval for such arrangement has been accorded by a resolution of the company in a general meeting, and if the director or the connected person is the director of the holding company, the approval shall also be required to be obtained by passing a resolution in the general meeting. तो कंपनी अपने डायरेक्टर से या कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर से तभी ही प्रॉपर्टी ले सकती है जब कोई जनरल मीटिंग में उसके अप्रूवल, चाहे होल्डिंग कंपनी का हो तो होल्डिंग के जनरल मीटिंग में, अपनी कंपनी का हो तो अपनी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होना जरूरी है. बिना शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के आप नहीं ले सकते. ओके, the notice for the approval of the resolution by the company or holding company in general shall include the particulars of the arrangement along with the value of the assets and duly calculated by the registered value. तो जो भी नोटिस शेयर होल्डर को दिया जाएगा उसमें क्लियरली लिखा जाएगा कि ये एसेट्स एक्वायर किया जा रहा है, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट रजिस्टर वैल्यू की लगाई जाएगी. Any arrangement entered into by the company or its holding company in contravention of the provision shall be voidable at the instance of the company unless a restitution of any money other than or other consideration which is the subject matter of the arrangement is no longer possible and the company has been indemnified by any other person for the loss or damage. So ये पूरा अरेंजमेंट वॉइडेबल है, पूरा अरेंजमेंट वॉइडेबल है, मतलब अगर कंपनी चाहे तो उसको अवॉइड भी कर सकती है. लेकिन किस तरह से कंपनी को डिफेंड किया जाएगा? तो लॉ में बोला गया कि अगर रेस्टिट्यूशन यानी पैसा वापस देना पॉसिबल नहीं है तो
So at least the company has to be indemnified for any other loss or damage which they have suffered, or any right are acquired bona fide for a value and without the notice of the contravention of the provisions of this section by any other person. अगर ये कंपनी के शेयर्स सामने बेचे गए या कोई और आपने बोनाफाइड ट्रांजैक्शंस किया है फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो ये जेन्युइन ट्रांजैक्शंस में कंपनी इसको रख भी सकती है या इसको अवॉइड भी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ओके. Now, the present case, PQR intends to enter into an arrangement with the director involving a question of acquisition of office premises against a consideration other than cash payable by issuance of company's equity shares to Ajit. Accordingly, the board of directors is advised to convene a general meeting of the members for the prior approval of the transactions and follow the above provisions of 192. तो हमने अपना conclusion दे दिया कि उनको एक जनरल मीटिंग कॉल करनी चाहिए और जनरल मीटिंग कॉल करने के बाद यस वो फिर ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको डायरेक्टर्स का ऑफिस लेना है कि नहीं लेना है. ओके. एंड सिंस द कंपनी इज इश्यूइंग शेयर्स टू अजीत, द कंपनी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द कंपनीज एक्ट. ये क्या था? फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल, दैट इज रेजिंग ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये नॉन कंस्टिट्यूशन अदर देन कैश में था पर कैपिटल तो बढ़ रहा है तो फिर फर्दर इशू का भी प्रोविजंस कंप्लाई करना पड़ेगा. दैट्स कॉल्ड समथिंग कॉल्ड चेरी ऑन केक. मतलब आपने लास्ट में जाते जाते ये भी समझा दिया कि फर्दर कैपिटल है तो ये भी कंप्लाई करना पड़ेगा. दैट्स कॉल्ड द नॉलेज ऑफ अ पर्सन. ओके फाइन. लेट्स सी क्वेश्चन 2a. FGS Limited incorporated in 2015 and its financial year ends on 31st March. The company held its AGM on 10th of July 2018. Thereafter, the company has not held its AGM till the November 2019. Okay, Manoj is the shareholder and he approaches you for the guidance. Briefly discuss the provisions of Companies Act and rules made thereunder and advise Manoj about the rights and circumstances. Okay, इसका मतलब क्वेश्चन में कंपनी ने एजीएम लास्ट ईयर किया था उसके बाद 2019 में एजीएम किया ही नहीं है. ऐसा सिचुएशन है जहां पे कंपनी एजीएम होल्ड नहीं कर पा रही. याद रखना ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन इसलिए लिया है बिकॉज प्रेजेंट सिचुएशन में पेंडेमिक देखते हुए यहाँ पे एक लिबर्टी दी गई थी. अगर आपको 2020 की बात की जाए तो पेंडेमिक सिचुएशन में एजीएम एक्सटेंशन कर दी गई है, लिबर्टी दी गई है, तो आप सूटेबली वो भी साइड कर सकते हो एग्जाम में कि ड्यू टू पेंडेमिक एमसी हैज गिवन लिबर्टी, तो आपके एजीएम्स आगे चले जा सकते हैं बिकॉज फाइनेंशियल ईयर बढ़ा दिया गया था सूटेबली फाइलिंग के हिसाब से दिसंबर तक. तो ठीक है वो तो एक लिबर्टी दे दी गई थी, लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन नहीं था 2019 यानी लास्ट ईयर, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या स्टेप्स लिए जा सकते थे. अब हम लॉ के हिसाब से बात करें तो सेक्शन 96 पहले बात करेंगे कि एजीएम कब होनी चाहिए, 15 मंथ्स का गैप क्या होता है और फिर एजीएम की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, और फिर 97 की बात करेंगे कि ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो एजीएम होल्ड कर भी सकती है और उसके क्या क्या प्रोविजन है. तो लेट्स डिस्कस द आंसर. द प्रोविजन ऑफ 96 and 97 and rule 74 providing for holding of an AGM and an application to NCLT shall be discussed as under. तो क्या लिख सकते हैं? Firstly, as per 96 subsection 1, every company other than one person company shall in each year hold in addition to the other meetings a general meeting as annual general meeting and shall specify the meeting in such notice calling it, and not more than 15 months shall elapse from the date of the AGM. So दो AGM के बीच में 15 months से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, आपको ये पॉइंट आउट करना है. And it is the provision of 96(1) that in case the first AGM, it has to be held within the period of 9 months from the closing of the first financial year and any other AGM within 6 months from the date of closing of the financial year. तो आपको ये भी बताना है कि जो पहला AGM है वो 9 मंथ्स के अंदर हो जाता है, दूसरा सेकंड एंड सब्सिक्वेंट 6 मंथ्स के अंदर हो जाता है. क्लियर? उसके साथ साथ अब आते हैं थर्ड प्रोवाइजर पे. थर्ड प्रोवाइजर ये बोलता है कि for special reasons there can be extension of time limits, okay, but not beyond 3 months by the register of companies. तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज टाइम लिमिट एक्सटेंड करना चाहे तो कर सकती है. अपने क्वेश्चन में टाइम लिमिट एक्सटेंशन के बारे में कुछ दिया नहीं, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. सो सेक्शन 97 के हिसाब से if any default is made in holding the AGM, okay, under section 96, that NCLT may, notwithstanding anything stated in the act or articles of the company or on an application of any of the member of the company, they can call or direct the meeting of the AGM and give some ancillary or consequential orders. तो NCLT के पास sufficient ताकत है, अगर किसी ने एप्लीकेशन किया कि सर ये लोग AGM कंडक्ट ही नहीं कर रहे तो they can pass any orders
and that notwithstanding any act or articles also. And the directions may include the direction that one member of the company present in person or proxy shall be deemed to constitute a meeting. Even one member can constitute a meeting. Yes, serious stuff. Okay, and the general meeting which is held in pursuance of the directions of the tribunal shall be deemed to be the annual general meeting of the company. तो उसको हम लोग AGM बोलेंगे जो ट्रिब्यूनल ने कॉल की है. Okay, and as per rule 74, the application for calling or obtaining the directions to call a AGM shall be made by the member in form NCLT1. तो application NCLT1 form में करनी है. साथ में क्या देना है? एक affidavit verifying the petition, bank draft for payment of application fee and other relevant documents. And the copy of the application has to be served on the ROC also before the hearing starts. Clear? तो आपने sufficiently rule 74 भी समझा दिया कि क्या requirements होती है application करने की. Now it is not stated in the question and therefore it is presumed that FGH has not obtained any kind of extension of ROC. यही मैं बोला थोड़ा नोट करके रखना कि extension नहीं लिया हो क्योंकि extension लिया हो तो फिर बात ही खत्म हो जाती है. Okay, as the company has not convened the AGM within 6 months from the close of the financial year till 30th September and more than 15 months has been elapsed from the AGM, Manoj may choose to file an application before the tribunal seeking the directions of calling of the AGM and other appropriate steps as discussed above. तो आपने पूरी तरह steps समझा दिए, क्या-क्या steps discuss किए और किस तरीके से AGM hold हो सकती है. Okay, clear? Fine. तो आई बिलीव अभी आंसर लिखने का तरीका समझ में आया, क्या क्या लिखना था वो समझ में आया. ओके, नाउ दीपेन इज द डायरेक्टर इन 9 companies, 1 dormant public company and 10 private company, and Deepan is invited by JK Limited to join them. Okay, so यहाँ पे वो number of directorship वाला question था, that is 165 hit होना चाहिए आपके दिमाग में. So 165 के हिसाब से 165(1) के हिसाब से after the commencement no person shall, the no person is there, no person shall hold the office of a director including that of alternate directorship in more than 20 companies at the same time. So 20 companies की limit थी, provided provided the maximum number of public companies shall not exceed 10. The maximum number of public companies shall not be exceeding 10. Now as per the explanation which is given in 165, for calculating, for recalling that limit, how do you calculate? The limit of the public company in which a person can be appointed as director, the directorship in a private company that are either holding or subsidiary of the public shall be deemed to be. तो एक क्लियर कर दिया गया, if a private company which is a subsidiary of the holding company will be included as a public company, not as a private company. And for reckoning the limit of directorship in 20 companies, the directorship in a dormant company shall be excluded. ये भी point clear है, ठीक है? तो आपने एग्जामिनर को पूरी तरह लॉ समझा दिया. Now in view of the above provisions, the directorship held in one dormant company has to be excluded. Clear? So can he become a director in JK Limited, which is a public company? Let's see. So he can accept the invitation of JKL Limited, and after the appointment in the JKL, the directorship of Deepen will be within the limit of 20 companies. How? He will be in 10 public companies, in one dormant public company which is excluded, and 10 private companies. So he is not violating the limits. Clear? So that's how you could have answered. And समझना है कैसे आंसर को लिखना है, आप लॉ समझाओ, फिर उसके बाद आप अपना आंसर समझाओ. That way you can answer very well. Okay. The third question was, Board of Directors of Williams Limited resolved to appoint Mohan as the alternate director. Okay, and Rakesh, Mohan is already appointed as the alternate director to Prakash. Okay. अच्छा, क्वेश्चन ऐसा था कि विलियम लिमिटेड कंपनी है और मोहन को अल्टरनेट डायरेक्टर बना रहे राकेश का, और मोहन ऑलरेडी प्रकाश का अल्टरनेट डायरेक्टर है, तो क्या एक अल्टरनेट डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है? And then appoint Mitesh as the director of the company as the alternate director to Manoj. क्या एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है? नहीं ना, नहीं ना. तो यही पॉइंट अपने को सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 से डिस्कस करके समझाना था. State the provisions of the Companies Act and the legality. So the provisions was section 161 subsection 2 के हिसाब से alternate director का. So the board of the company, if so authorized by its articles or by a resolution which is passed by the company in the general meeting, they can appoint a person not being a person holding any alternate directorship of any other person in the company,
or holding any directorship in the company to in the same company to act as an alternate director for the person who is absent for more than 3 months from India. तो हमने समझाया एक existing alternate director नहीं होना चाहिए और existing director नहीं होना चाहिए. That is the law. That person can become an alternate director, and no person shall be appointed as an alternate director or an independent director unless he is qualified to be an independent director. वो भी समझा दिया. Then an alternate director shall not hold office for longer than the permissible to the director in whose place he has been appointed, and he has to vacate the office if and when the director in whose place he has been appointed returns to India. So the original director, when he returns to India, the alternate director has to vacate the office also. And the term of the original director is to be determined when he so returns to India, and any provisions of automatic reappointment of the retiring director shall apply to the original director and to the alternate director as well. Okay. In view of the above, it can be stated that the decision of the board of directors not in conformity. Okay. अब आप अपना conclusion लिख रहे हो. Mr. Mohan is already appointed as an alternate director to Mr. Prakash, and therefore he cannot be appointed as an alternate director to Mr. Rakesh. And then आप लिखते हो Mr. Mitesh is the director of the company, and therefore he cannot be appointed as alternate director to Mr. Manoj for the same company. आप समझा? तो आपने पूरी तरह ऑल्टरनेट डायरेक्टर का प्रोविजन उसको समझाया और फिर उसके बाद जाके अपना कंक्लूजन लिखा. ठीक है, क्लियर? अब एक चीज याद रखना, अगर एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एक ही सेक्शंस के कोरिलेशंस में दो तीन चीजें पूछी गई हैं, तो प्लीज आंसर लिखते समय ध्यान रखना कि आप पूरी तरह बराबर लिख लो, क्योंकि अगर एक जगह आप सही हो एक जगह आप गलत हो तो मार्क्स बहुत बहुत हैवीली काटे जा सकते हैं. बिकॉज आप same provision पूछा गया and you are writing the answer in one point you are correct and the other you are wrong. You can understand it affects your marks. Okay. Okay, let's see the one. Miss question 3b, Monica is a director elected by small shareholders. She has approached you for advice whether a small shareholder director is eligible to be appointed as independent director. Small shareholder director independent director हो सकता है. जहां तक 151 सेक्शन का सवाल है, रेड विद रूल 7 हो तो सकता है. ठीक है, चलो एक एक करके आंसर देखते हैं. द प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स और स्मॉल शेयर होल्डर इज 151 रेड विद रूल 7 एग्जैक्टली. तो मिस मोनिका को क्या एडवाइस देंगे? से एज पर रूल 7 small shareholder director shall be considered as an independent director and shall be subject to be eligible if they are eligible in section 149 subsection 6, and they can give a declaration of his independence as per section 149 subsection 7 of the act. तो अगर 149 6 के हिसाब से अगर वो एलिजिबल है और 149 subsection 7 के हिसाब से वो डिक्लेरेशन दे सकती है, तो वो लड़की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकती है. ये था उसका पहला क्वेश्चन. दूसरा, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ एन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयरहोल्डर? इसका टेन्योर कितना होगा? ओके, जब तक अपने को याद आता है एक 3 साल का टेन्योर रहता है, उसके बाद उनका रीअपॉइंटमेंट वगैरह कुछ होता नहीं है. वो एक बार गए तो गए, बाद में स्पेसिफिक 3 साल खत्म करने के बाद आएंगे. तो लेट्स सी एंड आंसर दिस. ओके, द स्मॉल शेयर होल्डर्स कैन बी कंसिडर्ड. ठीक है, सेकेंड वाले का था रूल 7 के हिसाब से the appointment of a small shareholder director shall be subject to the provisions of 152. Okay, except the such director shall not be eligible to retire by rotation. वो point clear कर दिया. Such director's tenure as a small shareholder not exceed the period of 3 consecutive years. ये आया law में. And on expiry of the tenure, such director shall not be eligible for any kind of reappointment. Okay, thus the tenure of the small shareholder's director shall not be more than 3 consecutive years and cannot be reappointed. ये अपना आंसर आ गया. समझा कैसे लिखा? ओके, लॉ डिस्कस करो और फिर अपना कंक्लूजन देते जाओ. एंड थर्डली पूछा था, कैन अ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बी एसोसिएटेड विद द कंपनी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर ऑफ हिज ऑफिस? नहीं, क्योंकि अगर वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है और वो ऑफिस कंप्लीट कर चुका है, तो क्या कंपनी में वापस से डायरेक्टर बन सकता है? आई डाउट, नहीं बन सकता. और यही चीज आपको आंसर में लिखनी है कि रूल 7 के हिसाब से नहीं बन सकता. ओके, तो यहाँ पे रूल 7 के हिसाब से आएगा, दैट इज अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शैल नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही ceases to hold the office as a small shareholder director be appointed or be associated with such company in any other capacity directly or indirectly. Clear?
and after ceasing as a small shareholder director, he cannot be appointed or be associated with such company in any other capacity directly or indirectly for 3 years. सी आपने आंसर बता दिया कि 3 साल तक वो नहीं हो सकता, ठीक है। एंड फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या था, कैन अ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इन द सिमिलर कैपेसिटी इन 3 more कंपनीज, 3 और कंपनीज में नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक मुझे याद आता है एक और कंपनी या 2 और कंपनी, 2 कंपनी थी जिसमें से कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ये वाला पॉइंट आंसर आता है। क्लियर? सो क्या वो 3 और कंपनी में जा सकती है? चलो आंसर लिखते हैं। आंसर अपने दिमाग में पहले आप बना लिया करो और फिर लिखा करो। तो रूल 7 के हिसाब से नो पर्सन शैल होल्ड द पोजीशन ऑफ अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर in more than 2 companies at a time. It also provided that the second company in which he has been appointed shall not be in a business competing with the company or in conflict of interest with the first company. See, आपने प्रोविजन बता दिया कि 2 कंपनी से ज्यादा नहीं और कंपीटिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग कंपनीज में नहीं होना चाहिए। A person cannot be a small shareholder director in 3 companies and Monica will have to be advised accordingly. So इस तरह से आपने आंसर दिया, पर याद रखना जब आप एक ही टॉपिक से आंसर दे रहे हो तो एज फार एज पॉसिबल सारे आंसर में करेक्ट होने की करो, नहीं तो मार्क्स बहुत बैडली अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 4A में। रतनलाल इज अ मेंबर ऑफ राज रतन लिमिटेड, ही हैज गिवन अ नोटिस टू द कंपनी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ऑफ मिस्टर मनोहर द मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, तो एक मेंबर है और मेंबर का मैनेजिंग डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, इंस्पेक्ट करना चाहता है, क्या बोलते हैं, कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? मेंबर है, इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, क्या लिखूं? अगर जहां तक याद आता है सेक्शन 190 के हिसाब से कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप इंस्पेक्ट करवा सकते हो किसी भी मेंबर से। तो ये आंसर बैठ गया। 190 के हिसाब से अपने को आंसर लिखना पड़ेगा, तो ये आया आंसर। हम पहले लिखेंगे द प्रोविजन रिगार्डिंग द कीपिंग ऑफ द कॉपीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड द इंस्पेक्शन इज कंटेन्ड इन सेक्शन 190 ऑफ द एक्ट। फिर हम लिखेंगे एज पर सेक्शन 190 सबसेक्शन 1, एवरी कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस where the contract of service with the managing director, whole time director in writing a copy of that contract. Clear? And फिर लिखेंगे where such contract is not in writing, a written memorandum of setting out its term. तो कम से कम राइटिंग में होना चाहिए कि एमडी या होल टाइम डायरेक्टर किस बेसिस पे अपॉइंट हुए हैं। As per subsection 2 of 190, the copies of the contract or the memorandum shall be open for inspection of any member of the company without payment of fees. तो ये भी प्रोविजन हम लॉ साइट कर देते हैं कि इट इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन। फिर हम ये लिख सकते हैं कि if any default is made in complying with the provisions, the company shall be liable to a penalty of 25,000 rupees and every officer who is in default shall be liable to penalty of 5,000. तो अगर कंपनी इसका डिफॉल्ट करती है तो डिफॉल्ट फॉरगिवेबल नहीं है, वहां पे पेनल्टी लगती है। क्लियर? फिर आप ये लिख सकते हो 190 का सबसेक्शन 4 के हिसाब से द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी। सो इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी देन इट इज एक्सेप्टेड, पर अपने क्वेश्चन में शायद प्राइवेट नहीं, Raj Ratan Limited, which is a public company. So in the above provision, Ratan Lal is a member of Raj Ratan. He has a right to inspect the copies of the contract of service or memorandum setting out the terms of employment of Mr. Manohar, the managing director. तो उसके पास ये हक है, वो चेक करना चाहे तो चेक कर सकता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है। Okay? And if Ratanlal is not allowed the inspection, the company and every officer will be liable to penalty under section 190 subsection 3, and the company will be advised to allow Ratanlal inspection of the copy of the contract. तो अगर वो इंस्पेक्ट करना चाहे डेफिनेटली इंस्पेक्ट कर सकता है और उसको अलाउ ही करना पड़ेगा। ओके, सो आई बिलीव अभी ये समझ में आया किस तरीके से आंसर लिख रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। फिर क्वेश्चन 4B के हिसाब से मनोज वाज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिल्वर फॉर 5 years. He resigns from his office after completing 2 years for joining as a MD of another company and he demands compensation from the company. Board of has approached you for advice as a PCS. Briefly discuss the relevant. Okay. So MD कंपनी से रिजाइन कर चुका है, ठीक है, और वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर जाए, बट वो कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस मांग रहे हैं। लेकिन एमडी ने तो खुद रिजाइन किया है, उसको निकाला तो नहीं गया है, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्पेंसेशन? एग्जैक्टली ये हिट होना चाहिए। दैट इज 202 के हिसाब से ऐसे कौन से सिचुएशन है जहां पे कॉम्पेंसेशन देना नहीं बनता, पहले वो समझाते हुए फिर आपको अपना आंसर लिखना था कि यहाँ पे गिवन सिचुएशन में क्या करना है।
So provision of section 202 के हिसाब से that payment of compensation for loss of office or whole-time director. The provision is that a company can make an payment of compensation for loss to the managing director, whole-time director, or manager, but not to any other director by way of compensation for loss of office or retirement from the office in connection of any loss. तो अगर कंपनी ने किसी को निकाला है तो कंपनी उसको कॉम्पेंसेट कर सकती है प्रोवाइडेड ही इज द एमडी होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर. बाकी सारे डायरेक्टर्स को ये फैसिलिटी नहीं दी जाती. अब सेक्शन 202 के हिसाब से नो पेमेंट फॉर कॉम्पेंसेशन ऑफ लॉस कैन बी मेड इन फॉलोइंग सिचुएशंस. तो कौन सी सिचुएशन है जहां पे ये पेमेंट अलाउड नहीं होगी? तो वो थी कि where a director resigns from his office as a result of reconstruction of the company, maybe by amalgamation, merger, or body corporate, or on an amalgamation with another body corporate, and as such the managing director, whole-time director or manager is appointed in the other office, other reconstituted office. इसका मतलब ये था कि अगर किसी को ये एक कंपनी का दूसरे कंपनी में अमालगमेशन है, यहाँ से निकाल के दूसरे कंपनी में वो जा रहा है, वहाँ पे सेम मैनेजरियल पोजीशन पे, तो उसको कोई कॉम्पेंसेशन मांगने का हक नहीं था. Where a director resigns from his office otherwise than in reconstruction, वो resign करके जा रहा है. Where the office of the director is vacated by section 167, that is vacation of office, okay, including that of disqualification of the office also. Where the company is being wound up by the NCLT order or voluntary winding up के अंदर, where the director has been guilty of fraud or breach of trust or gross negligence mismanagement, मतलब डायरेक्टर खुद इन्वॉल्व था इन सब चीजों के लिए, तो ये इन्वॉल्वमेंट का इफेक्ट तो पड़ेगा. And where the director has instigated or kept directly taken part in bringing about the termination, the director ने खुद termination करवाया है. Okay, in view of the above provision, Mr. Manoj will not be entitled for any kind of compensation from silver pay. अब ये समझ में आया सबको? Clear? So that way you can be answering the questions. अब ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है, पूरा लॉ डिस्कस करके आप अच्छे से आंसर देते जा रहे हैं. ठीक है? क्वेश्चन ऐसे सिंपल थे, बस आपको ये अवेयरनेस रखनी है कि कहाँ से आ रहा है, कौन से टॉपिक से कनेक्ट हो रहा है. क्लियर? अब जैसे स्टार लिमिटेड हैज 3,425 members. Advise the board on the quorum of the AGM. And ABC has registered under the Companies Act in May 2000. Can the company contribute to political? अब ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं. एक आपको AGM का quorum पूछा है 103 की रिक्वायरमेंट, और कंट्रीब्यूशन 182 की रिक्वायरमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टी आती है. ठीक है, पहले quorum देखते हैं. So quorum of the general meeting. The provisions of the quorum of the general meeting for the members of the company contained in section 103 are stated below. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो unless the articles of the company provide for a larger number, the quorum of the general meeting of the public company is so and so. और मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना. जनरली स्टूडेंट्स 5 members वाला quorum लिखते हैं, बाकी का 5, 15, 30 था, 15 and 30 भूल जाते हैं. ये चीज का ध्यान रखना. कई स्टूडेंट्स का मैंने आंसर देखा 5 members उनको याद है, लेकिन आगे का प्रोविजन वो भूल चुके हैं, तो इसका ध्यान रखना. So in case of a public company, the 5 members personally present if the number of members or as on the date is not more than 1,000. Okay, the 5 members for 1,000. 15 members personally present if the number of members as on the date of the meeting is more than 1,000 but up to 5,000. And 30 members personally present if the number of members as on the date exceeds 5,000. So 5, 15 और 30 ये याद रखते हुए आपको quorum की requirements लिखनी थी. Clear? So that was a quorum requirement. Clear? And in case of a private company, 2 members personally present shall be the quorum of the general meeting. So आपने private company भी साथ में बता दिया. So Star Limited being a public company having more than 1,000 members but up to 5,000 members is required to have a presence of 15 or more members at the general meeting to ensure the presence of the quorum, and shall accordingly comply with the quorum. तो हमने बता दिया. और नेक्स्ट में पूछा गया था पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशंस के बारे में, दैट इज 182 के हिसाब से क्या प्रोविजन होता है. 182 subsection 1 of the Companies Act, notwithstanding anything contained in any other provision of this act, the company other than a government company and a company which has been in existence for less than 3 financial years may contribute an amount directly or indirectly to political party. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एंड अदर देन अ कंपनी व्हिच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो कंपनी है वो मई 2018 में आई है. मई 2018 की कंपनी 2020 में 3 years तो नहीं किया होगा. ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट इट डाउन.
that ABC was registered in May 2018 and therefore its existence is less than 3 financial years and therefore the company is not eligible for any kind of contribution to political party. आप समझ में आया? So ये आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स डिस्कस कर सकते हो और दोनों क्वेश्चन अलग था इसलिए दोनों की मार्किंग स्कीम दोनों का तरीका अलग था. ठीक है, आप समझना. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली मार्क्स दिए जाते हैं. ओके, क्वेश्चन 5 देखते हैं. कमेंट ऑन द फॉलोइंग केसेस द पर्सन कंसर्न विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक कंपनी. सो अब डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया. तो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड. राम has an application pending for the adjudication as an insolvent and the application is not yet decided. तो मिस्टर राम की एक एडजुडिकेशन एप्लीकेशन पेंडिंग है. क्या वो इंसॉल्वेंट होगा? राम की एडजुडिकेशन एप्लीकेशन पेंडिंग है. ओके, अगर राम की एडजुडिकेशन एप्लीकेशन पेंडिंग है मतलब उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है हो तो वो इंसॉल्वेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मेक्स नो डिफरेंस, बट वो डिस्क्वालिफाइड तो हो ही जाएगा. एग्जैक्टली. तो पॉइंट इज यहाँ पे 164 के हिसाब से प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर रिजल्टिंग अ पर्सन टू बी कंसीडर्ड डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट. So a person who has applied to be adjudicated as insolvent and the application is pending, therefore Ram is disqualified for appointment. यहाँ गया आंसर. Clear? Fine. Next question was Govind was convicted for an offence not involving moral turpitude and the sentence to imprisonment for 8 years, but a period of more than 5 years has elapsed. ये वाले में पता नहीं कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ा 5 इयर्स के बारे में ऊपर नीचे पका के आए हैं पर ऐसा आंसर नहीं था. 164 की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से 5 साल इलैप्स नहीं हुए लेकिन यहाँ पे ये था 8 साल, मतलब 7 साल से ऊपर हो चुका है और 5 साल भले इलैप्स नहीं हो लेकिन वो डिस्क्वालिफाइड होता है तो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है. याद आया? तो इस पार्ट को यहीं पे लिखना था कि a person who has been convicted for the offence whether or not involving a moral turpitude and sentenced for more than 7 years cannot be appointed even after the lapse of 5 years from the expiry of the sentence and shall be disqualified and hence Govind is disqualified. ये बताना था. एग्जैक्टली. आप समझ में आ रहा है कहाँ गड़बड़ हो रही है. एंड राजा हैज नॉट पेड द फाइनल कॉल ऑन 10,000 rupees held by him and so the company has fixed a date of 31st May 2019 as the last day. अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि राजा ने अगर 6 महीने के अंदर पेमेंट कर दी होती तो बात ठीक थी लेकिन अगर 6 महीने के अंदर पेमेंट नहीं करता तो गड़बड़ आती है बिकॉज देन ही इज एक्सीडिंग द लिमिट्स. क्लियर? तो यहाँ पे a person who has not paid the calls on shares and a period of 6 months has elapsed from the due date for fixing the payment shall be disqualified now. अब आप चाहो तो पॉजिटिव एसोसिएशन जैसे मैंने आंसर में पॉजिटिव ले लिया है तो नेगेटिव की जगह पे सपोज क्योंकि जनरली कॉल्स पे हो ही जाते हैं तो जनरली इसने अगर कॉल पे 6 महीने में कर दिए तो बात खत्म हो गई. और अगर 6 महीने में पेमेंट नहीं किए तो डिस्क्वालिफाई. सो इफ अ पीरियड ऑफ 6 months has not yet elapsed from the due date for fixed for the payment of the money which is 31st May and therefore Raja is not disqualified. तो अगर 6 महीना इलैप्स नहीं हुआ तो डिस्क्वालिफाइड नहीं, पर अगर 6 महीना इलैप्स हो चुका है तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा. आप दोनों पॉइंट ले सकते हो. ठीक है, आज की तारीख के हिसाब से सिंस 6 months has elapsed तो आप बोल सकते हो दैट ही इज डिस्क्वालिफाइड. ओके. Keshav, who is a director in the another company previously, has contravened the provision relating to related party. Can he be appointed as a director? Related party का contravention करके बैठा हुआ है तो ठीक है हमको भी बताना पड़ेगा कि रिलेटेड पार्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले को डायरेक्टर हम बना सकते हैं. आई बिलीव नहीं ना. चलो राइट डाउन. इसका आंसर देखते हैं. तो यहाँ पे a person who has contravened the provision of section 188 has been convicted during any of the preceding last financial year shall be disqualified. ओ लास्ट फाइनेंशियल 5 years की बात की गई है तो यहाँ पे इसका कन्विक्शन कब किया गया था. तो केशव इज अ डायरेक्टर एंड इसका कन्विक्शन जो हुआ है he has been convicted in 2017. तो 2020 के हिसाब से बात करूं तो क्लॉज डी का आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट इज यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a person who has contravened the provisions of section 188 and has been convicted in the last 5 years shall be disqualified. अब केशव के केस में केशव was convicted for violation under section 188 during 2017 which is yes 2017 which is preceding 5 years के हिसाब से and therefore he stands to be disqualified in law. तो केशव का 5 साल हुआ नहीं है therefore he stands to be disqualified in law. Clear? 165 के हिसाब से अगर बात करूं that is the next question की बात करूं so Prakash is holding a directorship of 15 companies and comprising of 9 public companies and 2 private companies which are subsidiaries of the public company and 4 private companies.
So 9 plus 2 is 11. That clearly implies that he is holding a directorship in more than 11 companies. Okay, तो ये उसके गड़बड़ कर दी है, तो इसका आंसर अपने को लिखने का है. So we can write down section 165 के हिसाब से the maximum number of companies in which a person can be a director shall not exceed 20 companies in which the public company should not be more than 10, and private companies that are subsidiary of the public company shall be treated as public company for this purpose. तो यहाँ पे आपको समझाना है that who is a director in 11 public companies shall be disqualified so to be appointed in any other public company because he is already holding more than 10 public companies के हिसाब से. क्लियर सबको समझ में आया? ओके फाइन. अभी क्वेश्चन 6A देखते हैं. फाइन. तो 6A पार्ट सी से आ गया आपका. पार्ट बी का सारे क्वेश्चंस तो अभी कवर कर लिए. तो लेट्स सी. CS Rohan is a company secretary in practice. He has availed loan against the personal investment from the bank. He has issued 2 checks towards the repayment of the said loan as per the terms of the sanction. Both the checks were returned by the bank with the remarks returned to the insufficient funds. Comment on the facts. तो उसने एक बैंक लोन लिया है, सामने अपना लोन रीपेमेंट करने के लिए चेक दिया और वो रिटर्न हुआ है एज अ इनसफिशिएंट फंड्स. क्या उसके खिलाफ CS इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के बेसिस पे कोई एक्शन ले सकती है? देखो ये डिपेंड करता है. अभी यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि उसका कन्विक्शन हुआ है. अगर आप प्रिजम्पशन लेते हो कि उसका कन्विक्शन हुआ है तो यस CS इंस्टीट्यूट एक्शन ले सकती है, फर्स्ट शेड्यूल में आ जाता है. अगर आप ये प्रिज्यूम करते हैं कि उसका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, सामने उसका पेमेंट हो गई, तो भी आंसर बराबर है. तो मैंने फर्स्ट वाला लिया, आप चाहो तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं. So as a company secretary is expected to maintain a high standard of integrity even in his personal affairs, and deviation from these standards even in the non-professional work would expose him to disciplinary action. ऐसा CS Act की requirements में लिखा गया है. Okay? And the member of the institute is subject to disciplinary action under section 21 of the CS Act if he is found guilty of any kind of professional or other misconduct. Clear? And as per clause 2 of part 4 of first schedule, a member of the institute, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of the other misconduct if, in the opinion of the council, he brings disrepute to the profession of the institute as a result of his action, whether or not related to professional work. So अगर वो डिसरेप्यूट लेके आता है काउंसिल को, दैट इज CS ने चेक बाउंसिंग करवा दिया, इंस्टीट्यूट का मेंबर पे नहीं कर पा रहा है, समथिंग लाइक दैट. So in that case, it will affect the institute, and that's why council can take an action. The question whether a particular act or omission constitute other misconduct should be based on the facts and circumstances of each case. तो ये determine करना पड़ेगा case to case basis पे. Part 3 of the second schedule of the Company Secretary Act provides that the member of the institute, whether in practice or not, shall not be deemed to be guilty of any other misconduct if he has been guilty by the civil court or criminal court for an offence which is punishable with the imprisonment for a term exceeding 6 months. तो यहाँ पे अगर किसी को सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट ने पनिश किया है फॉर एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल फॉर मोर देन 6 months, तो इन दैट केस दैट पर्सन शैल बी गिल्टी फॉर एन ऑफेंस. Now under Negotiable Instrument Act, where any check has been drawn by a person for a discharge of any kind of liability is written by the bank unpaid for insufficiency of funds, or the check amount exceeds the arrangement made by the drawer of the check, or the drawer of the check shall be deemed to be have committed the offence. तो अगर आप चेक ड्रॉ करते हो और आपको पता है आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, फिर भी चेक इशू किया करते हो, तो इन दैट केस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द कोर्ट कैन टेक अ सूटेबल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू. तो ये पॉइंट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन में दिया नहीं है that he has been guilty. तो ये बोला presumptions के बेसिस पे अगर आप ये लिखते हो कि he can be made guilty, तो आप यहाँ पे liable लिख सकते हो. आप ये भी लिख सकते हो कि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, वो अपना लोन रीपे कर देता है टाइम पे, तो he will not be made guilty. Both the way you can answer. So in the given case, the check was dishonored in the remark of insufficient funds, and CS Rohan may be liable for misconduct under the part 2 of clause 2 of the part 4 of the first schedule of the CS Act if the council is of the opinion that the offence under the Negotiable Instrument Act is due to the negligence or default of CS Rohan. The council has to be convinced that yes, CS Rohan ने गलती की है और उसके बेसिस पे उसको सजा मिलनी चाहिए थी. Okay, fine. चलो ये पॉइंट तो आपको समझ में आया. And next question was a middle-aged company secretary in practice, that is PCS, is considering to start a mega professional firm. Name the professional bodies with which the PCS can have a partnership as per the CS regulations. तो एक मेगा फर्म स्टार्ट करने की बात करिए और क्या क्या चीजों का ध्यान रखने की बात हो रही है. ठीक है,
तो यहाँ पे मेगा फर्म के हिसाब से क्या चीज है, मेगा फर्म कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म विद मोर देन 25 पार्टनर्स. एग्जैक्टली, a firm which provides a core professional service of a particular profession along with the allied and ancillary service with equal competence under the one roof is a multidisciplinary firm. So that's what he is deciding. एक multidisciplinary firm के clients को सारी service एक जगह मिल जाए. ठीक है? For example, a company under corporate law is the core of company secretary. However, they can be acquire expertise in other areas like direct taxation, labor law, economic law, accounting, insurance, international business, and IPR. They may be in the position to have a single window business solutions. तो एक CS के पास जाके आपको पूरा विंडो एक ही जगह पे सारा सॉल्यूशन मिल सकता है, पर आप दूसरे मेंबर्स को भी हायर करके एक ही रूफ के अंदर एक साथ में एक फर्म चला सकते हो. So Regulation 16B of the CS Company Secretary Act, which has introduced the core concept of multidisciplinary firm or a mega firm, determine the membership of the professional body for the partnership. And accordingly, for the purpose of entering into the partnership, as per the part 1 of the first schedule of the CS Act, a person shall be a member of the following bodies. So कौन-कौन bodies के साथ, कौन-कौन लोगों के साथ you can form a mega firm. So the member of the Institute of Chartered Accountancy of India, or member of the Institute of Cost and Work Accountants of India, or member of the Bar Council of India, or member of Institute of Engineers or Engineering University, member of Institute of Architects, Institute of Actuaries of India, professional bodies or institutions outside India whose qualification has been described. तो ये use करके आप mega firms, that is partnership firm खड़ी कर सकते हो. That's what the provision is. And therefore, the middle-aged company secretary who is considering to start a mega firm can enter into a partnership with a member of the above professional bodies, which can help him together cater the bigger assignments and meet the needs of the client and ensure timely and qualitative services. ये हो गया आंसर लिखने का तरीका. सो क्वाइट डिटेल आउट आपने समझा, काफी सारी चीजें आप आंसर्स में लिख सकते हो, पर याद रखना प्रोविजन ऑफ लॉ साइट करके आंसर लिखना है. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स और अच्छे से पढ़ो. तो दैट्स वेयर कंप्यूटर लॉ कम्स इनटू एन एंड. ओके, चलो बाय.